Hello everyone, good morning. And we are aware about that कि prelims start होने prelims है हमारे मई में 2023 की, right? And here is the need of the intense practice of the previous year question paper to clear the prelims exam. Okay, because if you are going to solve the previous year question paper, you are able to uh, do the 80% question in the exam hall. Why? Because there is a reason. Because through the previous year question, you are able to understand the strategy. You will able to understand the uh, process, how to set the question in the exam, in the paper. Okay, and you also able to read the mind of the UPSC panel who set the question, right? So this is the thing, and that's why this previous year question paper is a very important series for any exam. Especially in UPSC, it is a very important. Okay, see, if you are doing the revision, so there is a need to do the previous year question paper also. So here I'm started a new series where we are going to discuss the last 10-year previous year question paper, but now I'm starting a 2023 years 2023 year paper. So in this session we will talk about the 1 year paper. Okay, then after we will adding a 2 year, 3 year kind like that. Okay, first we will try to finish this year last year question paper, and then we will start with the last to last and combined session. Okay, but here you will get the almost 5 question from the art and culture, 3 question from the medieval, and 2 question from the ancient and medieval, right? And this is the 2023 paper. Okay, so let's start without any delay. And this is the thing. Just right. Just give me 1 minute. Okay, so I'm going to start this thing. So here is our slide where we are going to discuss about the question. In this session, we are only discuss about the question answer, previous year question answer. If we will successful this session, then the next in the next video, I will discuss about the tricks also, how you can eliminate the question with the keywords all. Okay, so this is the previous year question paper of 2023, and I'm going to discuss this question in the subject wise manner. So here I'm going to covering it ancient, medieval, and art and culture subject. Okay, so let's see how many question has had come in the last year. So if we see that, so in ancient there is only 2 question, in medieval there is only 3 question, and art and culture there is a 5 question. Okay, so let's see that how much this question is easier or difficult, or if we are able to solve it through the keywords, so it's also good for us, so that we can use our trick also. Okay, so let's move to the first question. This is related to the ancient history, and the question number 1 is that which one of the following reason was Dhanyang. Just a minute, I'm just setting the screen so that you are able to read it properly. Okay, so the ancient history, the first question is which one of the following religion was Dhanyankata, which flourished as a prominent Buddhist, okay, center under the Mahasankhika located. Okay, if you see the question, every year UPSC has asked the question which is based on the Buddhism and Jainism. Okay, even UPSC asked the question in an alternative manner. Like in 1 year they asked question on Buddhism, in the next year they asked question in the Jainism, right? So last year they asked question from the Buddhism. So and this is related to Dhanyankta. If you look the other previous year question paper, you can see that already this keyword is used in the option, right? So if we are going to solve the previous year question, we are able to understand that okay, this is the overall information we need to gather it, and through this information we are able to solve the question, right? Okay, come to the question again. So which one of the following religion, which of the following reason, I'm really sorry, which of the following reason was Dhanyankta, which flourished as the prominent Buddhist center under the Mahasangika located? Okay, so question number option is A, Andhra,
B. Gandhara, C. Kalinga, or D. Magadha. Okay, so the correct answer is, so before moving to the correct answer, let's see the what is the information about the option. Okay, because see, the question is related to reason, so here is the Andhra is the correct answer for this question, but there is a need to gather the information so that you can getting a question from related to that particular keyword, so you know about that thing, so you are able to solve the more question. Okay, so basically there are a few literary tradition about the presence of Buddhism in Andhra Pradesh during pre-modern period. Okay, and the famous Buddhist site of Amravati. See, again, there is a keyword Amravati and Dhanyankata, right? So you should just remember this two name. Okay, maybe last year UPSC has asked in this keyword. Maybe in coming year they will ask the question based on the Amravati. Okay, that's why this detailed information is important. So the famous Buddhist site of Amravati and Dhanyankata are associated with Buddha as a birthplace of one of the previous birth of Buddha and a preaching site of Buddha, respectively. Okay, Amravati and Dharnikota both formed part of ancient Dhanyankataka. Okay, so the capital of later, again, I'm disclaimer here. Sorry for my pronunciation. It may be some keywords I'm not able to pronounce, so I'm really sorry about this thing. So let's move up further. The capital of later Satvana. With the spread of Buddhism to a different part of the country, many sects appear. For example, the Theravadins had their center of activity at Kausambi. Mathura was the center of the Sarvati Vadini, and the Bhadra Yanika sect flourished at Nasik and Kanheri. Okay, so the origin of this sect may not have been originally due to the difference in the doctrine. In fact, that contributed to their origin and growth were factors related to the geographical diversity of the country, attitude of a various community at the local level, and the perhaps lacks of the coordination between the various exponent of the sect under the Satvana. So the Amravati region became the most important stronghold of Mahayana Buddhism, whereas the Satvira Vandani were popular in the north. Okay, so that's why answer A is correct in our question, Andhra Pradesh. And this is the fundamental question. This is the fundamental information you should know about the Buddhism and their reason, and where it was spreaded in north what and in south what. Right. So in this manner, you can gather this information. Okay, fine. Move to the next question. In ancient history, the question second is related to South India. Okay, reference to ancient South India. Um, Korkai, Pumpuhar, and Muchuri were well known as. So there is a keyword again, and this question again based on the keyword, that is South Indian, ancient South India, Korkai, Pumpuhar, Muchiri were well known as a what? Capital city, port, center of iron and steel making, or serene of Jan Tirthankar. So again, the rule has changed of the UPSC. See, in till 2021, UPSC asked the question in an alternative manner. Like in one year, they asked the question on Buddhism, in another year, they asked the question on Jainism. But we can see that here that in 2023, UPSC has asked the question in both topic, right? In Buddhism and Jainism as well, right? So now the trend has changed. You should have to focus, keep an eye of the previous year question paper so that you are able to solve the question correctly, right? Okay, so the answer of this question is B, because it is the center of the iron and steel making. But why? Let's understand the reason behind it. See, so the Korkai, Kumpuraha, Muchiri, well-known ports. But the Sangam literature provides the valuable insight into the urban centers and the culture of the early historical South India. So the
Pampattinam, also known as a Pampuhar or Puhar, right, was the premier Chola port in the early historical times, and the classical account refers to as a Kaberis or Kamara. So the Kakori was the major Pandya port, while Tondi and Muchuri were the important port in the Chera kingdom. So we are aware about the Chola, Chera, Pandya, right? These three kingdoms. We know about their battles also, right? So this Kakori, Pompuhar, or Machuri related to the Chera, Chola, and Pandya kingdom, and Kakori was the major Pandya port. Tondi and Muchiri was the important port in Chera kingdom. So the answer is B, port. So this all three name or four names is related to the port. So correct answer is B for this question. Okay. Now move to the next question, and the next question is related to medieval history. Read the question carefully. In medieval history, there is a three question. First question is, consider the following dynasty. Again, the question is related to dynasty, and see what is the question is saying is uh, Hoysala, Gahadavala, and Kakatiya. Fourth, Yadava. So how many of the above dynasty established under the kingdom in early 18th century? So this question is related to the century, year, right? Periods. So this is related to the periods. So again, the important thing कि आपको periods भी जो 18th सेंचुरी 17th और 19th, तो ये आपको याद रखने हैं. So the option is only one, only two, only three, or none, right? So इनमें से कौन सा, which how many of the above dynasty established their kingdom in early 18th century? So इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि कौन से होशियाला कब कौन किस ईयर में कौन सी सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई, या गाढ़ावाला या काकतिया या यादवा की जो डायनेस्टी है. एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा. वी कैन able to do the revision also, right, through the information. And suppose in the next means in the coming year, if they will going to ask you question only related to the kakatiya or only related to the hoshia, so you are able to solve the question. So see the Hoysala era कब से कब तक का था और क्या है इसमें important. So the Hoysala era in 1026 century, I say 134 century era तक थी, and it was marked by illustrious achievement in art. So Hoysala को आप connect करोगे कहाँ किस किस achievement से? Art, architecture and culture. Okay, so the nucleus of this activity lay in the present day Hassan district of Karnataka in India. So option one is not correct because it is not come under the 18th century. Okay, now move to the option number two, the Gahadavala dynasty, so also known as Gahadavalas of Kannauj, was a Rajput dynasty that ruled parts of the present day India, state of Uttar Pradesh and Bihar during 11th and 12th century. Okay, so their capital was located in Banaras in Gangetic Plain, and for a brief period they also controlled Kannauj. So option 2 is also not correct. It does not come under the 18th century. It's come under the 11th or 12th century. Now come to the third option, Kakatiya dynasty. So the Kakatiya dynasty ruled most of the Eastern Deccan. Okay, Eastern Deccan region in present day India between 12th to 14th century. तो काकतिया भी नहीं है 18th century में. ठीक है. So their territory comprised much of as a present day Telangana and Andhra Pradesh and part of the Eastern Karnataka. Okay, so North Tamil Nadu and Southern Odisha. So hence third is also not correct. So now लास्ट हम यादवा डायनेस्टी पे आते हैं जिसको सियोना या सेवियोना भी बोलते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नेम आल्सो. इफ यू विल गेट द नेम ऑफ द सियोना डायनेस्टी और सेवियोना डायनेस्टी, तो ये इसी यादव डायनेस्टी का ही नाम है. ठीक है. सो द शियोना और सेवियोना और यादवा डायनेस्टी ये स्टार्ट हुई थी 1850 से 1334 AD. ठीक है. And was an Indian dynasty which at its peak ruled a kingdom stretching from the Tungabhadra to the Narmada rivers, including present-day Maharashtra, North Karnataka, and the part of the Madhya Pradesh.
Okay, so from its capital is Devagiri. Now present date is Daulatabad in Maharashtra. And so the option 4 is not correct. So आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया none of the above. ठीक है, so ये कोई भी Vijayanagar empire constructed a large dam across the ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम थे 1 में. सो इसमें कौन से 18th सेंचुरी एडी का किंगडम में आया है? तो कोई भी नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. ठीक है, कौन सी डायनेस्टी कब आई है उसको हमने डिटेल में देख लिए हैं. फर्दर अगर इससे क्वेश्चन आता है तो वी आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस Tungbhadra river and the canal come educate several kilometers along with the river to the कैपिटल सिटी. और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के अदर क्वेश्चन देखोगे तो यस सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. ठीक है, ऑप्शन इज देवराया 1, मल्लिकार्जुन, वीरा विजया और विरूपाक्षा. ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए देवराया. ठीक है, इस पे आप सीरीज भी देख सकते हो, सनसेट टीवी करके जो आती है उसमें कुछ कुछ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया हिस्ट्री का कुछ कुछ क्लिप है, जैसे एक संविधान सीरीज है उसी तरीके से सनसेट टीवी पे आपको एंशियंट हिस्ट्री के किंगडम के भी छोटे छोटे क्लिप्स बने हुए हैं. तो उससे भी आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि कौन से राजा ने क्या कंस्ट्रक्शन करवाए थे अपने एम्पायर में. ठीक है, तो वहां से भी आप गैदर कर सकते हो इंफॉर्मेशन इफ यू आर फीलिंग बोर टू रीड द बुक राइट समटाइम. ओके, so the correct answer is A, Devaraya. Okay, so Devaraya 1 जो थे is around 1410 AD to got a barrage constructed across the Tungabhadra river and commission a 24 kilometer along advocate from the Tungabhadra river to the capital. Okay, so the account provided by the Nanji gives detail of the project undertaken by the Devaraya 1 that brought the prosperity to kingdom. So option A is correct. ठीक है, तो देवराया के बारे में हमने जाने हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्या है, कैसे उन्होंने क्या किया था और यहाँ से कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर का उन्होंने तैयार करवाया था. राइट, ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द medieval history and the question is who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़े हैं. पहला है अहमद शाह, महमूद सॉरी अहमद शाह, महमूद बेगारा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह. अहमद शाह और मोहम्मद शाह. ठीक है, तो ये है और आंसर है इसमें. देखते हैं क्या है आंसर हमारा, बट लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल कि कौन था. नीनो द कुनहा 1529 से 38 shifted the capital of the Portuguese colony from the Kochi to Goa in कब 1530. So the 1534 AD he captured the Diu and the basin from the Sultan of Gujarat. Okay, so the Bahadur Shah, Sultan of Gujarat, Bahadur Shah. So hence the option C is correct answer. Option C is correct answer. That is Bahadur Shah. Okay, ये कंप्लीट हो गया. चलो आर्ट एंड कल्चर करते हैं. आर्ट एंड कल्चर के हमारे टोटल 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में, तो देख लेते हैं वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. पेयर था, इसमें मैचिंग करना था हमने. सो बेल साइट यहाँ पास डिफाइन किया गया है और जस्ट अ मिनट, यहाँ पास वेल साइट हमारा डिफाइन कर दिया गया है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली रिलेटेड टू द आई थिंक देयर इज सम इशू, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, हाँ, नाउ वी आर हियर. ओके फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज आर्ट एंड कल्चर और इसमें मैच द फॉलोइंग किया गया है, जिसमें साइट के नाम दिए गए हैं और उसके साथ आपको साइट वेल नोन फॉर, मतलब एक साइट है और वो साइट किस नाम की वजह से जाना जाता है इस पे है. अरेंजिंग में यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रही है क्वेश्चन को अरेंज करने में, क्योंकि ये अलाइंग ऐसे कर दिया गया है, ऑल्दो इसको कॉलम वाइज होना चाहिए था. राइट, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. फाइन. सो बेस नगर के सामने लिखा है सेवाइट के सिरिन. सेकेंड ऑप्शन है भाजा. भाजा के सामने लिखा हुआ है बुद्धिस्ट केव सिरिन. सीताना सीताना वशल के सामने लिखा है जैन केव सिरिन. एंड हाउ मेनी ऑफ द एवर पेयर इज करेक्टली मैच. तो बेसा नगर क्या सेवाइट थे,
वाजा बुद्धिस्ट से रिलेटेड सीरीन था, और सीतानावशल जैन से रिलेटेड सीरीज था। अगर ये तीनों करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन ऑल 3 हो जाएगा। अगर इनमें में से दो भी कोई एक सही से किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट बिफोर नोइंग द करेक्ट आंसर, लेट्स नो अबाउट द इंटायर डिटेल ऑफ रिलेटेड टू दिस सीरीन। ठीक है, सो बेशनगर जो है वो वैष्णवाइट का है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन में लिखा है शिववाइट, तो वो नहीं होगा, वैष्णवाइट है। विष्णु भगवान के उस बेशानगर, हाँ बेशानगर आपका वैष्णवाइट से रिलेटेड सीरीन है, केव सीरीन है। सो पेयर वन इज नॉट करेक्टली मैच। सो दो क्या है डिटेल वो जान लेते हैं। सो ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी BC to the third century AD, many rulers from the West Asia and the Central Asia, like the Indo-Greeks and the Saka, Pratya, Pratyanas, Kushanas, assimilated into the Indian culture and adopted Indian religions. So some adopted Vaishnavism, which means they worship a Lord Vishnu. है ना, so ये विष्णु भगवान से related है, and the god of the protection and the preservance. So the Greek ambassador called the Heliodorus set up a pillar in honor of Lord Vasudeva at Beshanagar near Vidisa in MP around the middle of the 2nd century BC. वाजा की अगर हम बात करें तो इट इज अ बुद्धिस्ट केव ऑफ द श्रेणी, सो पेयर 2 इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो याद रखना है बी भाजा, बी बुद्धिस्ट, ये दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, बेसानगर और वैष्णोवाइट आप ऐसे याद रख सकते हो। शिवा वाइट नहीं होगा, वैष्णोवाइट होगा, वैष्णनगर वैष्णोवाइट। बाजा बुद्धिस्ट केव जो करेक्टली मैच है। सो बाजा केव आर बुद्धिस्ट केव इन पुणे, कहाँ पास है, पुणे में है, एंड दे आर अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्या हॉल है, हमें पता होना चाहिए चैत्या, और एक और होता है ना चैत्या, चैंट मेडिटेशन के लिए, और बिहारा होता है जहाँ बुद्धिस्ट का ग्रुप जो है, मॉन्क लोग जो है वो स्टे करते हैं, बिहारा। ठीक है, चैत्या और बिहारा दो होते हैं। सो दे हैव अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्या हॉल, तो ये करेक्टली मैच है, भाजपा बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ना। सीता सीता नावासल अगर है तो ये जैन केव सीरीन है। सो थर्ड वाला भी करेक्टली मैच है ये, और ये लोकेटेड कहाँ है, सो इट्स located in a teeny hamlet of the Sitanavashal in the Puddukottai district of Tamil Nadu. Sitanavashal cave is a Jain complex of cave dating back to the 2nd century, and it is believed that it was the settlement of the certain monks from the eastern part of India who came here to preach the lesson of the Jainism and spread the positivity of the ascetic life. And later on this site became a major Jain center. So Sitanavashal cave is generally considered as a rock cut monastery and houses several murals made out of the vegetable and the minerals dye in a numerous color. So this painting are definitely masterpiece in their own way and consider the period in which they were made. ठीक है, सो मोनाल्स पेंटिंग के लिए भी ये क्वेश्चन अगर हम इस कीवर्ड को यूज किया जाए तो ये करेक्ट होगा, तो ये याद रखना है हमने। ठीक है, कौन सी पेंटिंग है, मोनाल्स पेंटिंग, इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिस्ट इज ओरिजिन, बुद्धिस्ट के ओरिजिन से स्तूपा का ओरिजिन हुआ है। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. So इसमें से कौन सा करेक्ट है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी नहीं है, कोई एक है, कोई दो है। तो स्तूपा क्या है, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इस चीज को। स्तूपा जो है वो है संस्कृत फॉर हिप, is a mount like a hemispherical burial structure containing the relics of the Buddhist monk. And example, Sachi Stupa built over the Buddha relics, right? Hence, statement number 2 is correct. However, concept of stupa does not have a Buddhist origin. The word stupa is mentioned in the Rig Veda, Arthveda, Vajrasane Samhita, तैत्तरीय संहिता एटसेट्रा। तो इन सब जगह पे ये यूज हुआ है, बुद्धिस्ट में का ही ये ओरिजिन नहीं है, ये बुद्धिज्म के पहले से स्तूपा का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो द वर्ड स्तूपा इज मेंशन्ड इन दिस काइंड ऑफ संहिता और ऋग्वेदा और अथर्ववेदा। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, Rigveda refers to stupa raised by the kingdom Varuna over the forest in place of having no foundation. And the word stupa is also used in the same sense in Rigveda. Probably by then anything raised on the ground like a heap, like a pile, so might have been known as the stupa. So however, the Pali word stupa is quite similar to the term stupa.
So stupa means a conical heap, right? Or pile, or a mound, or a conical, or a bell-shaped serene containing a relics. So stupa is regarded as a monument for veneration, but a stupa seems to be associated with the votive and commemorative and offering purposes. So stupa thus gradually was related to the ritualistic and commemorative with sectarian affiliation with a school of philosophical obligatory and was bounded by aspect of the social economic life. So hence step number 3 is correct. And the Buddhist texts like Avadana, Satkam, Mahavandana, and Stupa Vandanam mention about the commemorative aspect of the stupa. Even the Jaina literature like Raya Pasenaya stupa refers to it. So probably in the later period, due to deep desire of the common mass to worship the Lord of the sake of salvation, stupa acquired its votive character as well. ठीक है. So ये हो गया अबाउट द स्तूपा. हमने बहुत सारी चीजें जानी है, क्या ओरिजिन है, क्या ओरिजिन नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें रॉन्ग है और 2 एंड 3 करेक्ट है. ठीक है. सो ऑल 3 तो नहीं करेक्ट है. स्तूपा जनरली, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है. ठीक है. सो ये हो गया. चलिए ऑप्शन नंबर 3 के सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ द वट्टा किरुतल एज मेंशन इन द संगम पोएम. ठीक है. संगम पोएम में वट्टा किरुतल क्या चीज को मेंशन करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडीगार्ड. ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लर्न द पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर. ऑप्शन नंबर सी यंग गर्ल कीपिंग वॉचिंग ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल. Or D, a king defeated in battle committing ritual suicide by starving himself to death. क्या है करेक्ट आंसर. सो संगम पोएम आर क्या था. संगम पोएम आर pervaded with the warrior ethics and the goal of the hero of the Puram poem was pukkal, मतलब glory या fame, and the heroic death was greatly valued. So it was believed that the spirit of a warrior who died in the battle dwelt in paradise. So a poem is Purana Nurru suggested that the body of the warrior who did not die in the battle were cut with swords before the funerary rites to simulate death in battle. So the practice of the Pattakirutal was one in which a defeated king committed ritual suicide by starving himself to death. So accompanied by those who had been close to him during his lifetime. So the worship of the memorial stone, जिसको नट्टुकल कहते हैं, was a corollary of the importance of the heroic idol. So the memorial stone were erected in honor of the heroes who died fighting valiantly in battle, and the spirit of the fallen hero was believed to reside in this stone. So hence the option number D is correct. D क्या है? King defeated in a battle, committing a ritual suicide by starving himself to death. Okay, now come to the question number 4. Again, question number 4 is a matching and it is related to the ancient history authors. तो फर्स्ट आपका लिटरली वर्क दिया है और बगल में ऑथर्स के नेम दिए हैं. देवी चंद्रगुप्ता, उन्होंने देवी चंद्रगुप्ता जो लिटरली वर्क है उसके ऑथर जो है बिल्हाना है. पता नहीं, देखते हैं क्या है आंसर. सेकेंड ऑप्शन दिया है हमें हमियारा महाकाव्य, इसके ऑथर्स का नाम लिखा है नया चंद्र सूरी. मिलिंदा पन्हा जो हम लोगों ने पढ़े हैं आर्ट एंड कल्चर में, उसमें लिखा है नागार्जुन. नीति वाक्य मित्र सोमादेव सूरी. सो हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच. तो थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लिटरेरी वर्क को कौन से ऑथर ने लिखे हैं, थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाना चाहिए. सो देवी चंद्रगुप्ता जो है वो विशाखा दत्त ने लिखे हैं एंड हेंस द पे फर्स्ट इज नॉट करेक्टली मैच. ठीक है. हमियारा महाकाव्य जो है वो नया चंद्र सूरी ने लिखे हैं. सो सेकंड हम करेक्टली कह सकते हैं कि मैच्ड है. मिलिंदा पन्हा को नागार्जुना ने ही लिखा है. सॉरी, मिलिंदा पन्हा नागार्जुना ने लिखा है. सो 3 इज नॉट करेक्ट. तो 3 में क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं. मिलिंदा पन्हा नागार्जुना, ये करेक्टली मैच है. मिलिंदा पन्हा नागार्जुना. सो ये यहाँ पास ये गलत लिखा हुआ है कि नॉट करेक्ट, बट इज करेक्टली ये मैच हो रहा है. यहाँ पे नागार्जुना ने ही लिखा है. सो ओनली 2, ओनली 1, ओनली 3.
बिकॉज नया चंद्र सूरी भी यहाँ करेक्ट है, नागार्जुना भी यहाँ करेक्ट है. सो फर्स्ट रॉन्ग है विशाखा दत्त वाला. What is the issue in Hens pair 3? Milinda Panha, Nagarjuna. Hens pair 3 is free match. नीति वाक्य मित्रा सोमदेव सूर्य. Hens 4 is correctly match. देखते हैं 4 में क्या है. सॉरी, भी करेक्टली मैच बता रहा है. Only 2, only 3. यहाँ ऑल 4 करेक्ट होना चाहिए, बट लेट मी चेक. फिर से मैं इस चीज को एक बार कंसिडर करूंगी, इसके कंप्लीट डिटेल को, क्योंकि टीम ने इसको प्रिपेयर किया है तो आई नीड टू रीड इट, राइट. सो देखते हैं इसको क्या करना है, बिकॉज एनसीईआरटी के कुछ रेफरेंस यहाँ दिए गए हैं जिसमें कुछ बातें लिखी गई हैं. फॉर क्लैरिफिकेशन यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं. द इंडियन फिलोसफर आचार्य नागार्जुना was the founder of the Madhyamaka school of Mahayana Buddhism and arguably the most influential Buddhist thinker or philosopher, whereas the old NCERT ancient history R.S. Sharma mentioned the Menander, who was an Indo-Greek ruler, also known as the Milinda, was converted to Buddhism by Nagasena, also known as Nagarjuna. He asked many questions to Nagasena, which were recorded in a book called Milinda Panho. So UPSC asked a question in prelims 1997. Milinda Panho is in form of the dialogue between King Milinda and which Buddhist monk? So Nagasena, Nagarjuna, Nagabhatta, or Kumari Bhatta. So according to UPSC, answer was Nagasena. So when UPSC in this particular question distinguishes Nagasena with Nagarjuna, then we should also consider the Nagasena different from the Nagarjuna. And that's why we have given the answer B. Okay, so now we can understand what is the issue of the option number 3, right? जिसको मैं कह रही हूँ कि correct होना चाहिए, but this is the reason. Thanks to the team who has given the entire detail of here. यूपीएससी ने 1997 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, है ना. तो नागार्जुना और नागासेना, अगेन ये हमें डिटेल एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा जब यूपीएससी का करेक्ट आंसर किया जाएगा. ठीक है, चलिए तब तक हमें क्लियर हो गया कि इसमें हमारा डाउट्स कहाँ है. सो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ओनली 2 को करेक्ट किया है. ओके, fine. Let's move to the next question. This is the last question of the art and culture, and the question is: souls are not only the property of animal and plant life, but also of rock, running water, and many other natural objects not looked as a living by other religious sect. So, the above statement reflects one of the core belief of each of the following religious sect of the ancient India. बहुत easy है. A. Buddhism, Jainism, Saivism, or Vaishnavism. We know about the correct answer is B. Jainism, right? क्योंकि अगर आप जैनिस तीर्थंकर को देखोगे तो they are covering their mouth with the मास्क, राइट. व्हाई दे आर सेइंग दैट कि कोई कीड़े मकोड़े हल्के से जीवाणु भी उनके मुंह में प्रवेश ना करे, क्योंकि उनका डेथ होगा, क्योंकि हर किसी में जान है, लाइक जीव है. सो जैनिज्म होल्ड द एवरी एटम हैज अ सोल, बट इट इज नॉट जीवा, because they do not have a sense organs. So the soul is both permanent or changing based on the extension. Jainism divides the substances into 2 classes, those that are extended in space and those are not. So although Jainism recognizes soul, it rejects the notion of an ultimate universal soul. So B is the correct answer. Even जहाँ तक मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, दे आर नॉट ईटिंग इन द नाइट, मीन्स अंधेरा होने के बाद वो खाते भी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि शायद अंधेरे में कोई उसमें जीव आ जाए, छोटे मोटे पतंगे कीड़े, अगर गलती से उसमें भी जान होती है तो अंधेरे में वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि शुरू से ये परंपरा चली आई हुई है. तो आफ्टर 6 o'clock जैसे ही अंधेरा होता है वो खाना भी नहीं खाते हैं, राइट. तो और वो चलना फिरना भी वर्जित करते हैं उस टाइम पे, सो दैट कि गलती से कोई उनके पैर के नीचे ना दब जाए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े. सो बेसिकली द बिलीव ऑफ Jainism, but okay, I don't have much knowledge about that. Whatever I have knowledge, which I read in the NCERT book. ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने आपको बताया. The rest of the detail is given here, so you can read it out. And yes, correct answer is Jainism of this question. Fine. So
थैंक यू फॉर द सेशन, टू वॉचिंग दिस एंटायर सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसके साथ फिर हम पॉलिटी और ज्योग्राफी को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है कि साख बनाने में 20 साल लगते हैं, हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में भी काफी साल लग जाते हैं, बट उसे गंवाने में 5 मिनट लगता है। मतलब इट्स टोटली अप टू योर डिसीजन। आपने अगर नहीं करना है प्रिपरेशन तो आप अभी ड्रॉप कर दोगे और ये 1 मिनट का डिसीजन होगा, बट अगर आपने 3 साल मेहनत करी है तो 1 साल और करिए और इसको एग्जाम को क्लियर करिए, ठीक है। आप कर सकते हैं। और अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग अलग तरह से करेंगे, और इसलिए हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। आप कर सकते हैं। अगर आप 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप आगे भी कर सकते हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। Do the lot of practice of the previous year question paper. This is the keyword to qualify the exam. Okay, so next इस सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। थैंक यू सो मच।